Hello everyone, welcome to Bilaspur IS Academy, and in this particular lecture we will talk about the geography of Chhattisgarh. So we have started with the geography of Chhattisgarh for English medium. So आज हम लोग क्या करेंगे, geography of Chhattisgarh. We will talk about the geography of Chhattisgarh, and in the geography of Chhattisgarh we have already discussed about the various things in my other lectures. So what we have covered till now, so we talked about 3-4 things क्योंकि ये important था, because from this particular lecture we are entering into the hardcore geography of Chhattisgarh where we will get to know about the various places and the associated things. So आपका सबसे पहले for this particular thing I have started with the mapping section. So हमने सबसे पहले कुछ maps में देखे थे कि where all the important places and the mountains and various rivers and also some of the important districts and also tehsils are located. So we have completed with the some of the map works. We will do other map works as well. So कुछ maps हमने देखे थे in the initial lectures. After doing the maps, we move towards something called geological structure of Chhattisgarh. Geological structure of Chhattisgarh, where I have talked about the rocks of Chhattisgarh. Okay, so we talked about the rocks of Chhattisgarh, and in the rock section I have talked about that on the basis of geology or the rock structure, Chhattisgarh is divided into the 3 divisions. Okay, on the basis of rocks it is divided into 3 divisions, including your दिस 3 नॉर्दर्न अपलैंड्स, नॉर्थ का जो अपलैंड रीजन है, मिडिल बेसिन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ओके, और छत्तीसगढ़ प्लेन रीजन्स, एंड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ द साउथ. ओके, सो बस्तर प्लेट्यू एंड ऑल we have already discussed. I am just giving you the brief about what all we have already completed, and we will start with the other part. Okay, and then after doing this 2 particular thing called maps and geological structure, we have talked about the physical division. What is this particular physical division? It is mainly on the basis of various things, including the rocks, including your human habitation, the different type of soils found there, the presence of various natural flora and fauna and other types of things present in that particular places, including the climate and vegetation types. On the basis of that particular, the area is divided into the various physical division, and on the basis of physical division, Chhattisgarh comprises of 4 important physical division. The 4 important physical division of Chhattisgarh are number 1 is your Eastern Baghelkhand Plateau. Eastern Baghelkhand Plateau. We talked about Mahanadi Basin, Mahanadi Plain or Mahanadi Basin. Okay. Then also we talked about the 3rd important features called your Pat region or Part Pradesh of Chhattisgarh. Okay. So Plateau region or Part Pradesh region. Okay. So and also we talked about the Bastar Plateau, famously called as your Dandakarani. ठीक है, सो दंडकारण्य और द बस्तर प्लेट्यू. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. वी हैव सीन इन देयर एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ एक्सटेंशन. सबसे बड़ा आपका रीजन कौन सा था? महानदी प्लेन था. ओके, देन वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग्स. द स्मॉलेस्ट वन इज योर पार्ट प्रदेश रीजन. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन द लास्ट लेक्चर. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट स्टडिंग वन बाय वन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ छत्तीसगढ़, एंड वी विल स्टार्ट विद द महानदी प्लेन, द लार्जेस्ट ऑफ देम ऑल. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द महानदी प्लेन, द लार्जेस्ट ऑफ द particular physical divisions of Chhattisgarh. So this lecture is very important in terms of your examination and also preparation. Okay, इस lecture से आपको बहुत कुछ एग्जाम में देखने को भी मिलेगा, बिकॉज इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पर्टिकुलर महानदी प्लेन. सो टुडे विल टॉक अबाउट द महानदी प्लेन और द छत्तीसगढ़ प्लेन. ओके, सो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन. हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट गिविंग यू द सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल राइट, एंड ऑल्सो आई विल गिव यू द थिंग्स रिगार्डिंग विच ऑल क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इन द मेंस, लाइक आई हैव स्टार्टेड विद द इन दैट पर्टिकुलर इंडियन सेक्शन. ओके, सो आज से आपका हम लोग कंटिन्यूसली एक असाइनमेंट पर्पज से भी काम करेंगे. ठीक है, वेयर आई विल गिव यू सम ऑफ द क्वेश्चन, यू विल राइट कंटिन्यूसली विद मी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द महानदी. Okay, so we'll start with the Mahanadi Basin or the Mahanadi Plain. Okay, Mahanadi Plains or Mahanadi Basin of Chhattisgarh. Okay, so first of all we'll see what all other names it is called by. ठीक है, so Mahanadi Basin आपका एक थोड़ा सा basic introduction. We'll talk about the basic introduction, then we'll move towards the other section. Talking about the basic things regarding this particular Mahanadi Plain, it is also called as the Chhattisgarh Plain. Okay, so this plain is also called as the Chhattisgarh Plain. Okay, and also this particular basin, if we talk about the Chhattisgarh Plain or the Mahanadi Plain, it is the largest. Okay, it is the largest physiographic division of Chhattisgarh. So it is the largest physiographic division of Chhattisgarh.
First of all, just note down this particular facts, then we'll move towards the other section. Largest physiographic division of Chhattisgarh. So this is called as the Chhattisgarh Plain. It is the largest physiographic division of Chhattisgarh. It is also called as the heart of Chhattisgarh. Okay, so heartland or the heart of Chhattisgarh. Okay, so it is also called as the heart of Chhattisgarh. Chhattisgarh is called as the rice bowl of India, but this particular thing, because of this particular only, Chhattisgarh is also called as the rice bowl of India. Okay, and this particular Mahanadi Plain. So if we talk about the shape of this particular Mahanadi Plain, okay, this is very important. Okay, sometimes PSC asks this type of question in the prelims. So if we talk about the name, this particular shape of this particular Mahanadi Plain, this particular Mahanadi Plain, ये वाला जो है, it is the fan shaped. Some of the books will write fan means your this particular fan जो घूम रहा है ऊपर. No, that is not the fan. Most of the books will say in this particular manner as well. This particular fan shape mean these are formed by the accumulation. Okay, so this is formed by the accumulation of alluvials. Okay, alluvial. And if you talk about this particular alluvial soils or the alluvial accumulation, suppose this is the river and this river eroded much of the sediments from this particular region and brings it with its flow. Okay, and in this particular depression area, जहाँ पर भी उसको depression मिलेगा, this river will fill up this depression through this particular sediment, and sediment get accumulated in this particular shape. Okay, sediment कैसा होगा, कुछ इस तरह से accumulate होगा. Why this? I'll also tell you. Sediment धीरे धीरे कुछ इस तरह से accumulate होगा. Okay, and this particular sediment get accumulated in this particular shape. Again, some of the sediment will accumulate here as in such manner. Okay, so ये क्या हो रहा है, इस तरह से accumulate होते होते पूरा का पूरा जो region है, ठीक है. So it look like this particular, and this particular is called as the fan shape. जो आपका डेल्टा होता है, किसी भी रिवर का डेल्टा होता है, यू हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ डेल्टा. एंड डेल्टा फॉर्मेशन इज मेनली वंस दिस पर्टिकुलर एलुवियल गेट एक्यूमुलेटेड, और एलुवियल जिस तरह से एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे, सो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक अ फैन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द एलुवियल फैन. ऐसा नहीं है कि आपका क्या है पंखे जैसा उसका शेप है, ओरिएंटेशन है, नहीं, आपका क्या है ये इस तरह से एक्यूमुलेशन है. दिस द वे द रिवर डिपॉजिटेड इट सेल्फ, ये जिस तरह से आप इसको क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, एंड दैट डिपोजिशन इज कॉल्ड एज द एलुवियल फेंस. तो ये डिपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फेंस. Okay, these are called as alluvial fens, and once this fen also get eroded, it is called as the paddy plain. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, paddy plain और penny plain. But that is the hardcore geography, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है. बट आपको इतना समझना है कि because of this alluvial fens, जो alluvial जो आपका क्या हो रहे हैं, accumulate हो रहा है, that is accumulated in the fan shape. Hence the shape of this particular Mahanadi Basin is your fan shape. Okay, so please remember these 2-3 things. It is also called as the Chhattisgarh Plain, is the heart of Chhattisgarh, largest physiographic division of Chhattisgarh. It says it is a fan shape. And in terms of, if we talk about the largest physiographic division of Chhattisgarh, it is because it comprises almost, it is extended in the half of Chhattisgarh, or it occupied 50.34% of total geographical area of Chhattisgarh. ठीक है, so total geographical area की बात करेंगे, it occupies 50.34% total geographical area of Chhattisgarh, which is around, जो कितना है, 64068 स्क्वायर किलोमीटर. तो कितना है आपका, 64068 स्क्वायर किलोमीटर. सो ये इतना बड़ा एरिया होने के कारण इट इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़. सो प्लीज़ रिमेंबर this particular 2 things and the shape of this particular. One times PSC also talked about the slope of this particular region, इसका slope कैसा है, ठीक है, और towards which direction it extended, और उसका किस तरफ से orientation है. So if you talk about the slope of this particular Mahanadi Plain, I will explain each and everything once I will start with the that particular map depiction. First of all, just remember these 2-3 facts, then we'll move towards the other thing. So slope, if we talk about the slope of this Mahanadi Plain, it is towards the east. Okay, not a eastern slope, it is towards the east. So आपका कैसा है, वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, ठीक है. एंड इट इज़ मेनली सीन, अगर आप नॉर्मल भी देखेंगे तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, वंस विल सी द मैप, सो योर महानदी रिवर विल कम लाइक दिस पर्टिकुलर एंड फ्लो इन द ईस्टर्न डायरेक्शन. शिवनाथ विल कम एंड फ्लो इन दिस पर्टिकुलर. वाई द रिवर आर फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, बिकॉज द स्लोप जो होगा, स्लोप का ओरिएंटेशन ही ऐसा कुछ होगा. ओके, रिवर विल नॉट फ्लो
in this particular direction. अपने slope के against river flow नहीं होगा, river will follow that particular slope. So okay, so this particular is your slope is towards the east. So this is some of the basic information regarding Mahanadi Plain. Now we'll talk about the various division of Mahanadi. So I have already given you the division in the last lecture. So I will just give you here the division again, and I will explain you through the maps. Okay. So now we'll see the various division of this particular Mahanadi Plain. These are some of the facts. I will give you the questions as well in the last part of your lectures, और उसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी आप किस तरह से इस तरह के आंसर्स को लिख सकते हैं. ओके, सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस. ओके, नाउ आई विल सी something called division. Okay, so we will see the Mahanadi Plains or the Mahanadi Basin and its various division. So Mahanadi Basin is divided into, अगर हम division की बात करेंगे, so it is comprising mainly of in the two parts. One is your Mahanadi Basin area, Mahanadi Basin area, and other one is your upland area or the surrounding upland. ठीक है, upland area or the surrounding upland area of Mahanadi Basin. If we talk about the basin areas, in the basin area, particularly this thing, we have your Mahanadi Shivnath Dwab, we have Mahanadi Shivnath Dwab region. Okay, then we will have your Shivnath Plains, Shivnath Plain areas. Okay, then we have the marginal land, a bit patch of land towards the Mahanadi on the western side of Mahanadi. So we will have the marginal lands of Mahanadi Plain, marginal Mahanadi ground, marginal grounds of Mahanadi. Then on the northern part we will have something called Bilaspur Basin, Bilaspur Basin. We will have the Korba Basin, Korba Basin. We will have Raigad Basin. Okay, so this particular Korba Basin is also called as this particular Korba Basin, Hasdev Basin. Okay, and here Raigad Basin or the Korba Basin, here we will have the Mand Kelo Basin. So in between these two particular, we will also have your Mand Kelo Basin. River Mand in Raigad is your Mand Kelo Basin, and Korba and Raigad Basin together comprises of your Hasdev, this particular Hasdev, and your Mand Basin, Hasdev Mand Basin. Okay, I have already given you this particular thing. Okay, and one more thing, in the northern part we will see one more thing called, a part of this particular Korba Basin only is your Korba Rampur Basin. Okay, Korba Rampur Basin. Once I will depict that particular map, everything will be clear to you. Okay, so Mahanadi Shivnath Dwab, in this particular Shivnath Plain, marginal ground of Mahanadi, we will have Bilaspur Basin, Hasdev Mand Basin, we have Raigad Basin, we have Korba Basin, and the Hasdev Rampur Basin. Okay, so these are the various basin part of this particular Mahanadi Plain. And now talking about the upland region, if we talk about the upland region or the surrounding highland region, we will have your Michael ranges, very important Michael range, part of Satpura mountains. Okay, then we have your Churi Udaipur mountain, Churi Udaipur Matringa mountain. Okay, so we will have the Churi Udaipur Matringa mountain. Then we will also have your Pendra Lormi plateau, Pendra Lormi plateau region. Apart from this particular Pendra Lormi plateau region, we will have your eastern marginal highland, eastern marginal highland area. I will talk about this particular कौन से mountains उसमें आएंगे. Then we have the southern highlands, and also we will have the western marginal highland, western marginal highland. And in this particular part of your eastern marginal highland, इसके ऊपर देखेंगे तो आपका we have the Sarangarh highland, and above your Sarangarh highland we have your Chavardhar mountains. Okay, Chavardhar. So these are the various section or the division of this particular Mahanadi Plain. And all this thing, if we talk about all this particular thing, अगर ये पूरे के पूरे को देखेंगे, so this particular Mahanadi Basin is extended in the 16 district of Chhattisgarh. Okay, please remember this particular thing. छत्तीसगढ़ की अभी 16 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका क्या है, इसका एक्सटेंशन है. बट इन मोस्ट ऑफ द बुक
बिकॉज छत्तीसगढ़ में ये हमेशा एक क्या हो जाता है, डिस्प्यूट बन जाता है, ठीक है। अभी भी क्या है, बुक्स विल नॉट बी अपडेटेड, आपका क्या है पुराने बुक ही चल रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से वो सेट करते हैं। सो इन द मोस्ट ऑफ द अर्लियर बुक्स दे विल राइट इट एज योर 15 डिस्ट्रिक्ट, ओके। क्या बोलेंगे कि महानदी का जो प्लेन है इट इज़ एक्सटेंडेड इन द 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बट एट प्रेजेंट इफ यू सी द प्रेजेंट सिनेरियो इट विल एक्सटेंड इन द 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिकॉज दिस पर्टिकुलर इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू इट फॉल्स इन द GPM district, Gorilla, Pendra and Marwahi districts of Chhattisgarh, and this particular Marwahi district become the 20th district of Chhattisgarh। अगर उसको भी कंसिडर करेंगे तो 15 + 1 होना चाहिए 16, बट इन मोस्ट ऑफ द बुक दे आर राइटिंग इट एज योर 15 डिस्ट्रिक्ट्स। बट आई होप कि एक चीज़ क्या हो जाएगा बिफोर योर एग्जाम, क्योंकि अभी भी टाइम है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग गेट अपडेटेड। इफ़ दिस इज़ नॉट अपडेटेड तो मैं मोस्टली आपको ये बोलूँगा कि वो क्या कर रहे हैं, पुराने बुक से क्वेश्चन सेट होता है और वहीं से वो आंसर पिक कर लेते हैं, ओके। सो प्लीज़ वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर, जब हम लोगों का प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिव हम जाएंगे तब आई विल गिव यू दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी आप क्या लेकर चलेंगे, इट फॉल्स इन द 16 डिस्ट्रिक्ट। आप क्या करेंगे, क्योंकि हमको मेंस में वी डोंट नीड टू राइट द नेम, वी डोंट नीड टू गिव द फिगर्स, वी नीड टू राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सो हम नाम लिखकर भी यहाँ पर काम चला सकते हैं, ठीक है। बट फॉर द प्रीलिम्स वी नो द एग्जैक्ट फिगर, क्योंकि एकदम डेटा पूछ लेते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ओके। सो एग्जैक्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ बुक दे आर स्टिल राइटिंग 15, बट एज द GPM इज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड सो वी शुड हैव द 16 डिस्ट्रिक्ट्स here, okay। So please remember this particular thing. So it is extended in the 16 districts of Chhattisgarh including your Gorilla, Pendra and Marwahi। First of all we will draw this particular projection here कि आपका ये कैसा दिखेगा, then we'll talk about the each section one by one, okay। So talking about this particular, I have already given you the maps। जितने लोग देख रहे हैं already you are familiar with the maps of Chhattisgarh, so I am not drawing the complete map of Chhattisgarh, जितना हमें इसके लिए required है I am drawing that much only, okay। So this particular thing, okay, so this is the map of that particular Chhattisgarh, okay। I am drawing this thing। So this particular is your Korea, okay, this is the Korea district, okay, above one is your Korea। this particular ये वाला जो है ये है सरगुजा, here we have Surajpur, okay, and here we have Jaspur, okay। So this 4 we need, so मैंने आपको उस चीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, okay। If you talk about this particular lower section, ये नीचे वाले की बात करें, so something like this। So here we have your Kanker, so this is your Kanker, okay, and here this particular section we have your Kondagaon, ओके। सो दिस मच डिस्ट्रिक्ट्स वी नीड, क्योंकि आपको ऊपर के क्या होने चाहिए, समझ आना चाहिए इसका सारा का सारा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स पे टच कर रहा है, किस पे टच नहीं कर रहा है, ओके। सो ये वाले डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, उसको वो टच नहीं कर रहा है। बिलो दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वी हैव द एक्सटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवीजन। सो महानदी प्लेन और द महानदी बेसिन एरिया इज एक्सटेंडेड इन द 16 डिस्ट्रिक्ट्स और मेनली इन द 3 डिविजन्स, ओके। तो 3 ही डिवीजन में आपका फैला हुआ है, एंड दैट पर्टिकुलर 3 डिविजन्स आर योर बिलासपुर डिवीजन, ओके। सो इट एक्सटेंडेड इन योर बिलासपुर डिवीजन, ऑल्सो इन योर दुर्ग डिवीजन, एंड ऑल्सो इन योर दैट पर्टिकुलर रायपुर डिवीजन, ओके। सो कहाँ पे है, बिलासपुर में है, आपका दुर्ग में है और रायपुर डिवीजन में। सो दिस अबव पार्ट इज योर बिलासपुर डिवीजन, दिस वन इज योर दुर्ग डिवीजन एंड दिस इज योर रायपुर डिवीजन। सो इट एक्सटेंडेड इन द 3 डिविजन्स एंड इन द 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर 3 डिविजन्स ओनली, ओके। सो दिस इज द पिक्चर अबाउट योर महानदी बेसिन। सो ये पूरा का पूरा क्या है, ये महानदी बेसिन रीजन है। नाउ विल प्लॉट ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों को उसमें पहले प्लॉट करके देखते हैं हाउ दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ विल लुक लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द अपलैंड एरियाज, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द अपलैंड एरिया, वी हैव द मैकल रेंजेस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर this particular region, not till here, but here। So this is your Mackle range, okay। So these are the Mackle ranges, above Mackle ranges this particular, this is Pendra Lormi plateau, so this is your Pendra Lormi plateau, this is Mackle ranges, okay। So that one is your Pendra Lormi, here we have your Mackle range, okay। So this is your Pendra Lormi,
होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन इफ यू टॉक अबाउट द अबव सेक्शन, कोरिया में टच नहीं करेगा, बट ये वाला जो सेक्शन है क्योंकि हमको इसको देखना है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर, दिस इज द कोरबा बेसिन और हसदेव बेसिन, यू कैन से इट एज हसदेव बेसिन और द कोरबा बेसिन, दिस पर्टिकुलर लाइन. ओके, सो कोरबा बेसिन. अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोरबा बेसिन हियर, ये वाला कोरबा बेसिन के बाद अगर देखेंगे इट विल टच सम पार्ट ऑफ सरगुजा एंड एक्सटेंड टिल रायगढ़, एंड रायगढ़ पे यहाँ से दिस पर्टिकुलर. ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज योर छुरी उदयपुर मतरिंगा माउंटेन. ओके, सो दिस इज योर छुरी उदयपुर और मतरिंगा. Okay, so we have Mackal, we have Pendra Plateau, we have Korba, we have Churi, Udaipur, Materinga. Then in this particular section of Raigad, अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में here we have the small this type of sections और division, इस तरह से mountain division दिखेंगे छोटे छोटे. So this particular division or look like a piece of that particular rice. So these are called as your Chavardhar. Okay, so these are Chavardhar. So we have Mackal, Pendra Lormi, Korba, Churi Udaipur Matringa, we have your Chavardhar. Now apart from Chavardhar, if you see this particular section, यहाँ से अगर देखा जाए, here your Mahasamund and this particular region of Dhamtari till Dhamtari, if you see this particular in Chhattisgarh section only, don't look into that particular thing. So ये वाला जो section है, अगर छत्तीसगढ़ का ये वाला सेक्शन को देखेंगे सो इट इज़ कॉल्ड एज योर वेस्टर्न, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज योर ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड. ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट है. सो दीज आर द ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, दीज आर ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स. ओके, सो दिस इज ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, दिस इज पेंड्रालोरमी, कोरबा, चवाडहर एंड ऑल एवरी सेक्शन इज हियर. नाउ दिस पर्टिकुलर धमतरी, देन इन द बालोद एंड द दुर्ग. So this is the Durg upland or the Balod Durg upland or the southern upland. So these are the Balod Durg upland region. Okay, so this is the Balod Durg upland region, and from this particular Balod only till this particular Mackal range, if you see, this is called as your marginal highland. So this is our marginal. These are the marginal western highland. Okay, so we have the marginal western highland, we have the marginal eastern highland. If you look this particular राजनांदगांव, ये राजनांदगांव है, तो राजनांदगांव के यहाँ पर आपका क्या आता है, मोहल्ला, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर मानपुर. सो दिस टू तहसील, मोहल्ला एंड मानपुर तहसील आर नॉट द पार्ट ऑफ योर छत्तीसगढ़ बेसिन. प्लीज रिमेंबर दिस टू पर्टिकुलर, ये जो दो दिख रहे हैं अलग से ये वाले, सो नॉट द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन. ओके, सो राजनांदगांव है लेकिन राजनांदगांव पूरा नहीं है. राजनांदगांव का ये दो तहसील, कौन कौन सा तहसील है वो, मोहल्ला एंड मानपुर. सो मोहल्ला एंड मानपुर तहसील ऑफ राजनांदगांव इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ बेसिन. ओके, सो मोहल्ला एंड दिस पर्टिकुलर मानपुर, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो ये क्या है आपका, दिस आर द सराउंडिंग मार्जिनल highlands of your Mahanadi Basin. If you talk about this particular Mackal range, we have Churi Udaipur, Pendra-Lurmi Plateau, Chavardhar, Eastern Marginal Highland, Southern Highland and your Western Highland. I'll give you the names of everything. So particularly अभी हम लोग पहले इस डिवीजन को समझते हैं. Okay, now I'll draw the rivers. और अब यहाँ पर हम लोग पहले रिवर्स को बनाकर देखते हैं, because we need the rivers to explain you the particular things. I need that particular thing of rivers. This particularly इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है. So it will look like this particular, ऐसा, ठीक है. So this is the particular map. Now we will draw the rivers. So from this particular region, ये जो बीच का एरिया दिख रहा है here in राजनांदगांव, this particularly, so this particular ये जो जा रहा है, this is your river शिवनाथ. Okay, river Shivnath. And in the eastern marginal highland, if you talk about the eastern marginal highland, see these are the Mackal, और Mackal का point नहीं, यहाँ पर point है, these are not the point of Mackal. This particular highland, यहाँ पर जो mountain है, it is called as your Panabaras mountain. Okay, Panabaras mountain, and from this particular region, river Shivnath enter the Chhattisgarh. So this is the Panabaras mountain, and from Panabaras, this particular river Shivnath enter in Chhattisgarh and flows like this particularly.
ओके, सो रिवर शिवनाथ. एंड हियर ऑन द ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड इन द धमतरी, अगर धमतरी की बात करें यहाँ ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड में, सो हियर वी हैव योर सिहावा माउंटेन. सो दिस पर्टिकुलर इज योर सिहावा माउंटेन. Sihava mountain also called as your Shringi mountain. So it is also called as your Shringi mountain or Suktimati mountain. Suktimati or Shringi mountain. ठीक है, so please remember these names as well. Okay, so this is the Sihava mountain, and from this particular Sihava mountain river Mahanadi originates. So river Mahanadi will come like this particular. Okay, it will goes here. Kanker is bit longer than this particular. Kanker will come till here, so it will come in this particular region, enter the Kanker, and from this particular Balod it will take a turn, again enter the Dhamtari. So this is the river Mahanadi. Then it will flow in this particular region, goes like this, and this is the river Mahanadi. Okay, so ये वाला region क्या है? ये है river Mahanadi, and this particular Shivnath, sorry, a bit of here, it will goes like this, and this particular. So this is river Shivnath, this is the river Shivnath, and that one is your river Mahanadi. If we draw the third other this particular river, so from this particular Korea, in Korea, here in Changbakar we have your Devgarh mountain. Okay, so we have here Devgarh mountain. So from this particular Devgarh mountain, river Hasdev. So this is river Hasdev. Okay, so river Hasdev will originate, and river Hasdev will come from this particular region, following this particular path. It will come like this and meet here at your Kera Sihadevi. I will talk about the places where various river meet together. वो हम लोग कहाँ पर देखेंगे? in the river basin or the drainage part. Here we are seeing the section only. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करना है? सेक्शन को समझना है in terms of your महानदी प्लेन. रिवर का अलग से फिर से पढ़ेंगे. ड्रेनेज बेसिन विल अगेन स्टडी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इज योर रिवर हसदेव, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरगुजा, इफ यू टॉक अबाउट द सरगुजा, सो यहाँ पर आपका क्या है? सरगुजा पे, and here we have the Ramgarh mountains in this particular section, and we have the Udaipur mountain.